तो क्या होगा? More. Neora nine. Neora. Last topic है balance होगा magnetic property होगी होगा बोलो सब बोलो कई सारे तो पेंटिंग अब मैं चुप हो जाओ मैं करता हूँ चला अब जब होता मैं फोन करता हूँ बोलती हूँ आप बात करेंगे ओके मुझे भी और start with it. Let us start with the next topic. We have a catalytic properties. DNF block में catalytic properties. ओए transition elements पहले सुनो. Transition elements and the compounds are good catalyst. Transition elements and the compounds are good catalyst. For example, hydrogenation of oil in the presence of nickel. अब निकल आपको डी ब्लॉक एलिमेंट to form fat, that is hydrogenation of oil. ये process आपको commercial, so you use nickel for as a catalyst. Second is Haber's process. Haber's ऐसे कितने की? I'm giving one example. Haber's process में N2 plus 3H2 in the presence of Fe, अब iron भी D block to form ammonia in a big commercial. What is the catalyst uses? What is the catalyst used? Iron. So iron is the what? Catalyst. There is something third process called as, we have SO2 contact process बोलते हैं इसे, contact process. Contact process में SO2 plus O2 in the presence of V2O5 vanadium pentoxide to give SO3. This is used in the manufacture of sulfuric acid. ये सब commercial process है. So in the commercial process, there are n number of catalysts are used. मेरा question is, why D and F block, why D block elements are preferred as catalyst? Why not sodium, potassium, all that? What is the quality that these elements have that they act as a good catalyst? The first point is they show variable oxidation state. बोलते हैं, what is variable oxidation state? Second is they show variable oxidation state. They provide larger surface area. Larger
अब फॉर एग्जाम्पल आयरन है, आयरन के ऊपर कौन बैठती है? हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. That is, they provide larger surface area. Second reason आपको, they show variable oxidation state. Yes, दो reason, no other reasons. समझ में आया? Right. Transition elements, catalytic property लिखो. Catalytic property. Transition elements and the compounds act as good catalyst. Good catalyst. Example लिखो तीन. Write this. Write this. Example. Hydrogenation of oil. Two reasons. Or reason लिखो. They they show variable oxidation state. First reason क्या? They show what? Second, they provide larger surface area. Okay. Larger surface area. They provide larger surface area. Next, now what is variable oxidation state? Let us start with this. Let us start with this. Right, next, variable oxidation state.
कौन सा यूज करना? हाँ, लास्ट ईयर ये अलग है यार बाबा. Yes. Start. Have a look here. No, don't. Wait a minute. Wait a minute. Transition elements shows variable oxidation state. For example, can you see here? Cams. Now, see here. When you see variable oxidation state, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper. Titanium shows +2, +3, and +4. Magnus in 3D shows maximum. मालूम हो रहा है? Why does the transit? That is called why they show variable oxidation state. The reason is they show variable oxidation state. The variable oxidation state because the energy gap between n minus 1d and ns, the energy gap between n minus 1d and ns is almost same. Hence, electrons take part in bonding. Reason, ये 3D series elements. First question puts us, how the question is, why does transition element shows variable oxidation state? उसका आंसर क्या रहा ना? The energy gap between n minus 1d and ns is almost same, and the electrons take part in bonding. अब ऐसा क्वेश्चन आता, नेम द 3D सीरीज एलिमेंट विच डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन. कौन नहीं दिखाता? स्कैंडियम. पर्टिकुलरली उन्हें बोला ट्रांजिशन करको. अगर उन्हें नॉन ट्रांजिशन बोला तो जिंक. इन 3D सीरीज मैग्नेस शोज हाईएस्ट. कितना? +7. प्लस. ओके, अंडरस्टूड. और एक क्वेश्चन, all this shows, all the elements shows which oxidation state? +2 and +3. +2 and right. Transition element ये लिखना है. This you have to write. This transition element shows variable oxidation state. वो ये लिखना. वो लिखना हो स्कैंडियम +3.
Or first question, right? Transition element shows variable oxidation state, variable oxidation state because variable oxidation state because the energy gap between n minus 1d and ns is almost same. Hence, electrons take part in bonding. Or done? Finished? Wrote this? Okay, first question. Likho. First question. Name the 3D series. First question. Likho. Name the 3D series transition metal. Name the 3D series transition metal which does not shows variable oxidation state. Does not shows क्या? आंसर क्या? ट्रांजिशन बोला नॉन ट्रांजिशन बोला? तो ट्रांजिशन का तो स्कैंडियम, ट्रांजिशन का तो स्कैंडियम, जिंक कहते जिंक. Next question. Answer is scandium. How much? How much? Plus 3. Or next question likho. Name the 3D series non-transition element. Name the non-transition element which does not shows variable oxidation state. अब आंसर क्या? जिंक. Next question. Name the transition elements in 3D series. Name the transition elements in what? 3D series. 3D series which shows maximum oxidation state. Answer. Magnus. How much? Plus 7. Plus 7. अब ऐसा क्वेश्चन आया. For example, name the transition element. Name the transition element in D block. D block which shows maximum oxidation state. Maximum oxidation state. Maximum क्या? Maximum oxidation state. Answer is osmium plus 8. How much? Plus 8 कौन ना? Osmium. लिख लिया OS. D block में. Name the element in D block that shows what? Maximum. Okay, next. Okay. Now next is I want you to write this. What that is? Oxidation state you wrote.
their oxides, write this, right? Oxides. Okay. Yes. Next, melting point. Next topic is what? Melting point. Right, melting point. Right. Write this graph. Melting point. वो ग्राफ बराबर डॉटेड लाइंस दिखाना, सब लिखना है, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, मेल्टिंग पॉइंट एंड एटॉमिक नंबर, जल्दी लिखना, और जगह छोड़ना लेफ्ट साइड में, थोड़ी जगह लेफ्ट साइड में छोड़ना, कुछ लिखने का है. ड्रॉ द ग्राफ मेल्टिंग पॉइंट. नोट, ये ड्रॉ करना है सच डॉटेड लाइंस, हर एक चीज. और और डन. कैन यू प्रोसीड? कैन यू प्रोसीड? यहाँ देखो, यहाँ इसे बोलती है कॉन्सेप्ट ऑफ द बोर्ड. कॉन्सेप्ट ऑफ द बोर्ड ये इंपॉर्टेंट है. ओए,
टाइटानियम से लेको कॉपर तक रेड, दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज. Zirconium to silver, it is 4D. Hafnium to gold is 5D. 3D, 4D, 5D. Don't write, listen first. पहले समझ में तो आना ना कैसे क्वेश्चंस आती हैं नीट में. नाउ 3D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 5D सीरीज, देन 4D सीरीज, देन 3D सीरीज. करेक्ट. जनरली सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर कंपेयर करें इन जनरल 5D सीरीज की ज्यादा है. क्यों? तो ग्रीन लाइन इज अबव ऑल दिस. अब ये होगा, दिस इज द ट्रेंड, जनरल ट्रेंड. एक्सेप्शनल्स अलग ही. अब सिर्फ 3D सीरीज का यू हैव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम की. अगर ये ग्राफ को देखें, सो कॉपर इज एट द डाउन, देन इट इज Mn. Mn की यस कॉपर की ज्यादा है. Mn इज, कॉपर इज मोर देन Mn. उसके बाद निकल, उसके बाद कोबाल्ट, देन आयरन, उसके बाद नो आयरन यस वेनेडियम, उसके बाद आपको टाइटानियम. दिस इज द सीक्वेंस. यस. अब यहां सबसे तीनों में 3D, 4D, 5D में सबसे ज्यादा 4D टंगस्टन, सबसे ज्यादा मोलिब्डेनम, बाद क्रोमियम सबसे ज्यादा. दिस इज सीक्वेंस. 3D सीरीज में सबसे ज्यादा क्रोमियम, 4D सीरीज में, 4D सीरीज में मोलिब्डेनम, क्या नाम है? मोलिब्डेनम. उसके बाद टंगस्टन, डब्ल्यू को इधर आओ, ये थोड़ा अलग अजीब है. सबसे ज्यादा इन तीनों में सबसे कम किसकी केस होगा? तो सिल्वर की सबसे कम. उसके बाद Au की, उसके बाद कॉपर की. और कॉपर इज ग्रेटर देन गोल्ड, गोल्ड इज ग्रेटर देन सिल्वर. दिस इज द सीक्वेंस. अब कॉपर आपको 3D सीरीज का, सिल्वर आपको 4D सीरीज का, सिल्वर इस इन्हें आपको 5D सीरीज का. यस. नहीं दिखता. सबसे कम किसका? सिल्वर का. करेक्ट है. उसके बाद Au. करेक्ट है. यस राइट. 3D सीरीज. पहले क्वेश्चन, विच हैज हाईएस्ट इन 3D सीरीज? क्रोमियम. 4D में मोलिब्डेनम. उसके बाद टंगस्टन. और और अच्छा सबसे लीस्ट ओए सिल्वर. उसके बाद नहीं गोल्ड, गोल्ड. उसके बाद कॉपर.
और नेक्स्ट हाईएस्ट लिखे है, हाईएस्ट कौन ना, टंगस्टन, देन मोलिब्डेनम, देन क्रोमियम. सबसे कम, सबसे लीस्ट इन 3D सीरीज Mn. और मालूम हुआ. नेक्स्ट right, why they have highest melting point, transition elements have highest melting point, because 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 the electrons, no, because the involvement of the electrons, because the involvement of the electrons from Nd and also and also ns electrons, ns electrons, or next in general, greater the number of valence electrons, greater the number of valence electrons, stronger is the metallic bond. और होगा, write like this. Now next write oxides of d block element. Oxides करको लिखो, क्या लिखो, oxides. yes, right, ऐसा लिखो, देखो स्कैंडियम का अलग लिखो, ऐसा लिखो, you write like this, like this. I want you to write Sc2O3 होगा, टाइटेनियम Ti2O3 TiO TiO2 Ti2O3 TiO, ऐसा ऐसा straight, not ऐसा, right, and all the oxides you write. Finished? Done? Can we start this way? लिख डाले, come back to this.
कम बैक टू द क्वेश्चन. आप देखो ऐसा कर लो. Here TiO2, Ti2O3, TiO X plus charge oxygen for -2. -2 into 2 is equal to 0. X is equal to +4. +4. 2x plus -2 into 3 is equal to 0. 2x is equal to +6. X is equal to +3. Ti is x plus -2 into 1 is equal to 0. एक ऑक्सीजन आटम है. X is equal to +2 in a +2. Lower oxidation state are generally acidic. Higher oxidation state are basic. यहाँ पहले क्या करो, सबके भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके ऊपर लिखो. राइट. ऑक्सीजन पर -2 नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं समझ में आया? TiO2 है, टाइटेनियम को X ले लो, ऑक्सीजन को चार्ज आपको -2, कितने एटम्स ही? 2 is equal to 0. X is equal to 2 2s are 4 -4 is equal to X is equal to +4. ऐसा पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना. और फिनिश्ड. और व्हाट हैपेंड? इसका क्या है? पूरा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट.
Calculated, everybody. You wrote this? You wrote? Yes. Now come back now. इसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखो. इसका क्या है? +4 in a lower oxidation state is +2. Higher is, so lower oxidation generally are what? Basic. Higher oxidation state are acidic. लिख लो. इसमें कौन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट? 2 and 3 is basic. +4 is okay. इधर इधर करें, इधर नहीं करें. कितना आया इधर? +5. वेरी गुड. Two and 3 are basic. 4 and 5 is, इधर करें कितना आया? +6. 3 and 4 is amphoteric. क्या लिख लो? 3 and 4 is amphoteric. ये इंपॉर्टेंट. क्रोमियम का +3 and +4 are amphoteric. What happened? Done? इधर आओ. इधर क्या था? +2 है ना? नहीं, -4. -2 into 4 क्या था? 8. ये मिक्स ऑक्साइड है. छोड़ डालो, ये छोड़ डालो. I'll tell you why. This is +2. +2 +2 +3 +4 +7. +4 is amphoteric. लिख लो. In Mn, +4 is amphoteric. आप देखो. There are 3 oxides which are Mn2O3, Fe2, Fe3O4, CO3O4. All these oxide are mixed oxide. Sir, मालूम नहीं हुआ. What do you mean by mixed oxide? कहते mixture of MnO plus Mn2O3. ऐड करो. Mn और Mn कितना? अरे Mn कितना? Mn2O3 नहीं है. MnO and MnO3 मिक्स ऑक्साइड. इसे ऐड करो. Mn2O4. सिमिलर वे Fe3O4 में मिक्स ऑक्साइड कौन सा? FeO प्लस similar way. So which are the oxides which are mixed oxide? लिख लो.
or can we? पक्का क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये क्वेश्चन Mn yes this is the note point नीट में the ability oh sorry yeah the ability of oxygen to stabilize higher oxidation state exceeds that of the fluorine कहतो Mn को फ्लोरीन के साथ 4 बट ऑक्सीजन के साथ Mn2O7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको x प्लस माइनस 1 into 4 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू +4 लेकिन इसके साथ 2x प्लस -2 into 7 इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू +14 x इज इक्वल टू +7 बट तुम्हें कंपेयर करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है समझ में बात लाइक दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन कई को दूसरा के साथ नहीं बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली दो जने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन क्लोरीन एंड सॉरी फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की तो वो हिसाब से देखे तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा रहना फ्लोरीन के साथ रहना बट दिखा रहा किसके साथ ऑक्सीजन so this is a statement the ability of the oxygen to stabilize higher oxidation state exceeds than the fluorine that is the highest Mn fluoride is MnO4 whereas is Mn2O7 why this is the ability of the oxygen to form multiple bonds to the metal means अगर तुम्हें Mn के साथ देखे दिस इज सिंगल बॉन्ड किसके साथ फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ इट इज लाइक दिस it forms what double bond multiple bond so multiple bond is stabilizes that is what the ability of the oxygen to form multiple bond with the metals explains the superiority अंडरस्टूड समझ में आया ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है हाउ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये सब आता है समझ में आना क्वेश्चन पहले समझ में आया क्वेश्चन सो वही अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा वही ट्रांजिशन एलिमेंट शोज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का तो बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाईली अगर ऐसा बोला Mn only forms MnF4 whereas oxygen will form Mn2O7 has higher oxidation state than the fluorine तो the answer should be the ability of the oxygen to form multiple bond with the metal stabilizes समझ में लिख लो ट्रांजिशन फर्स्ट लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट shows higher oxidation state transition element shows higher oxidation state with oxygen and fluorine or higher oxidation state with what oxygen and because they are highly electronegative element that you read the ability of the oxygen
to stabilizes this higher oxidation state exceeds than that of what? Fluorine. The highest, the highest, what is it? The highest what? What is that? The highest oxidation state with the fluorine is +4. +4 which नहीं है. Whereas with oxygen is, this is because the ability of oxygen to form multiple bond. Multiple what? Bonds. क्लियर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में. ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एमएन. एक ऑप्शन एमएन F6 रखता है, एक एमएन F4 रखता है. तो कौन सा लिखती है? एमएन F4. एमएन समझ में आया? एक टॉपिक करेंगे. व्हाट टाइम यू केम? क्या टाइम है इस क्लास का? क्या टाइम है इस क्लास का? लास्ट 3 to 5 this. Let's start this. एक टॉपिक है. Let us learn this. What is called as interstitial compound? Oi, last. What is interstitial compounds? Smaller atoms. देखना है. Smaller atoms like carbon, hydrogen, nitrogen. Don't write. First listen. मेरे पास 3D सीरीज एलिमेंट है. ये आपको आयरन चुपके. ये आयरन एटम्स है. दिस इज आयरन एटम्स. ये आयरन एटम के बीच में क्या करती है? दिस इज प्योर आयरन. आयरन एटम में a pure iron it is. So these smaller atoms like carbon or hydrogen or nitrogen, they occupy or they are trapped in the crystal lattice. Crystal lattice का तो space. Crystal lattice ये term use करते समय. Crystal. So what is interstitial compounds का तो smaller atoms like carbon, hydrogen and nitrogen are trapped in of transition elements of what are called interstitial compounds. FeH 0.9, Ti titanium, C carbon. नहीं मालूम हुआ? मालूम हुआ? What is interstitial compounds? मालूम हुआ? What is interstitial compound? Smaller atoms, carbon, hydrogen and nitrogen are trapped in the crystal lattice of transition elements are called, लिख लो, smaller atoms like carbon, hydrogen and nitrogen are trapped in the crystal lattice of what?
transition elements are trapped where crystal lattice of are called what? इसके प्रॉपर्टीज पूछती है इसका प्रॉपर्टीज व्हाट इज दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो interstitial compounds are hard and dense compared to pure metal pure iron pure iron देखो और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन कंपाउंड देखो किसकी मेल्टिंग पॉइंट हो करेक्ट एटम टाइटली पैक रहती है एक एटम के बीच में हर एक एटम जब बैठा तो टाइट रहता है यू रिक्वायर लॉट ऑफ हीट टू डिसोसिएट देम so this is first they have high sorry interstitial compounds hard and dense अब इन hard and dense रहने की वजह से high they have high melting point first point they are hard and dense compared to pure metal they have high what melting point third they are chemically inert they are chemically what inert का तो क्या नाम less reactive they retain the conductivity metal is a good conductor ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी गुड कंडक्टर वाले समझ में आया क्या बोले हमें दे रिटेन दी और 3 4 हो गया लास्ट ऑफ दिस इज दे आर नॉन stoichiometric they are non what non stoichiometric fine we'll stop here